Good morning, everyone. So we discussed about the brute force attack in the last class, and we have seen that with the help of all the available candidate solutions or candidate keys, we try to break the password, right? Then we have seen uh, classical substitution ciphers. Here, sorry, we try to replace plain text with means a different text with the help of some substitutions like this one. You can see in case of Caesar cipher, we try to replace this letter by the third letter on. Huh. It's like me, M becomes P, E becomes A, H, E become H, T become W, M, N, O, P, the third one, E, F, G, H. Similarly, the other words. Okay. Then similarly, these things you have to know that we can mathematically give a number to each letter like A, B, C, D, F, C, S, I up to Z from 0, 1, 2 to 25. 26 letters, of course, we are starting with 0. So A to 0, B to 1, C to D, 2 like that. Then we have the Caesar cipher as CEP P plus K mod 26. 26 letters are there. It is a key. So we want to find out that cipher tags. Okay, C stands for cipher tags. With the help of this formula, plain text plus key. Okay, just adding these their numbers and then try to find out the mod with respect to 26. Similarly, for plain text, we are just subtracting that key from that ciphertext position and then finding out the mode with respect to 26. We'll get that plain text. Okay, so that way we will deal with these formulas whenever this ciphers are concerned. So I hope this is clear to everyone. Now, then cryptanalysis of Caesar cipher. We have only 26 possible ciphers, like 8, because the numbers are up to Z, A to Z. Then could simply try is in turn a brute force approach. Given ciphertext, just try all shapes of letters. Do not need to recognize when we have plain text. So that is also means what we are doing actually. We are trying to find out the different ways how we convert or how we substitute our plain text with a different number. So that is the cryptanalysis of Caesar cipher. Again, I want to ask you, what is cryptanalysis? Then how do you define it? In the last class also, we have gone through this. So what was the definition of cryptanalysis? Can anybody tell me? Sir, study of methods in deciphering the ciphertext. Without knowing the key. Okay, good. Then mono-alphabetic cipher, rather than just shifting the alphabet, could shuffle or jumble the letters arbitrarily. Each plain text letter maps to a different random ciphertext letter. So, ये क्या है? What actually we are doing? See, in the first case, you know that 3 letters. After 3 letters, we have that particular ciphertext. Or if ciphertext, then we again come back to the earlier start letter, right? So you know about that, how to convert it into ciphertext or how to get back that plain text. So it is very easy. Yes, just we have discussed about a formula.
where key is there, then that will be a complex one. But otherwise, it is simple. So why not to shuffle the letters? Shuffle the letters means what? We change the positions of the letters arbitrarily. Okay? Look at this. Okay, you can see A, B, C, D, F, Z up to Z. Now, cipher is this one. Observe this carefully and tell me what we are doing here. বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো মই কি কৈছো যে মনো अल्फाबेटिक सिफारत আমি কি কৈছো सफल কৰি দিছো नाउ ए टू एग्जांपल ये एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिए पहला वाला और मुझे बताओ कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली सिफार कैसे बना रहे हैं प्लेन से Sir, fourth letter to replace kori asu. So we are replacing the first by the fourth. Suppose A by D, then D by K. B by K, then how is it possible? Because if you say fourth, then No, sir, no. Then V also comes next. Yes. Yes. Explain it properly. ভালকে লক্ষ্য কৰা, please look at this two. Forget about the next example, first example. Look at this carefully and tell me what we are doing here. You can see my screen, right? So base screen kon dekha pai asa? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then please try. Even I have given the answer already. You just need to tell it from your side. So we have shuffled the letters. Exactly. Okay, we just shuffle the letters. Randomly shuffle the letters. Right? और कुछ कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? कोई और जन बताएंगे? Can anybody tell me that are we doing something else here? आपको इसके लिए ये जो एग्जांपल है ध्यान से देखना पड़ेगा. पहले ABCDEFG अब तो Z है, नीचे D, A की जगह पे D आया, राइट? आप यहाँ और कहीं पे A है नहीं है, ठीक है? तो ये सपोज B की जगह पे K आया और कहीं पे B है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? अरे you guys are there or तो not? इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा, डायरेक्ट से सफल कर दिया. यही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को. मीन्स और कुछ हो रहा है यहाँ पे. देखो प्लेन टेक्स्ट में क्या है, A B C D, यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या? Any letter is No, sir. So it's very No, simple. sir. Okay, very simple then. Then now consider this example. If we wish to replace letters, ये एक साथ लिख दिया हमने विदाउट स्पेस, है ना? आप जब सिफर टेक्स्ट बन रहा है, ये कैसे बन रहा है ये मुझे बताओ. 1 मिनट टाइम लो, कोई बात नहीं, बट सही ढंग से ऑब्जर्व करके ही बताना जो भी आंसर बोलोगे आप लोग. Second one, हाँ. If we wish to replace letter, then cipher text जो मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है? Sir, Sir, by पिछोड़ letter replacing to- letters. एक एक करके बताओ प्लीज. हाँ, एजन एजन के क्या? Sir, if it is A, sir, if it is A, then we are replacing it by B. Means not replacing by the third place number, but the very first number. Very first number. Like example to দিয়াচোন কেনেকে example to থৈছে? মানে sir ইয়াত W আছে, W টোৰ জেগাত আমি R লিখিছো, মানে W ৰ পিছত R আহে. Then আমি দেখিছো প্লেন টেক্সটত double T আছে, তো T পিছত U এ দুটা আহিছে.
So sir তেনেকে প্ৰথমতে আমি 3 নম্বৰ প্লেছৰ যিটো লেটাৰ আছিল হেতু লৈছো কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ যিটো লেটাৰ হয় হেতুৱে লৈছো এজনকে পি পিছত ইউ আহে তো আমি ইউ প্ৰথম এই ইউটোৱে লৈছো Okay, good observation. Who is that? sir Amlan Okay, very good, Amlan. So anyone else? Because see, this belongs to part of your reasoning also, huh? Reasoning में भी आप लोग को इस type का questions मिलेगा और आपको पता होगा शायद यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट सेल का ये है क्या बोलते हैं टेक्निकल ग्राउंड है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एप्टीट्यूड वो मैं और एक मैडम है हम लोग देखते हैं ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कोई 1-2 क्लास में इस टाइप का कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस भी बताऊं ठीक है तो ये ठीक है हम साइबर सिक्योरिटी में पढ़ रहे हैं बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रीजनिंग हाँ यहाँ आपको सब कुछ दिया हुआ है व्हाट एक्चुअली नीड यू नीड टू ऑब्जर्व इट वेरी माइन्यूटली like Amlan just said now I want to know from all of you that what your observation says कैसे हो रहा है ये कैसे साइफरटेक्स्ट बन रहा है कोई और लॉजिक वगैरह नहीं है ये आपको खुद देख के आपको समझ में आ जाएगा वही बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे अरे सब लोग सबे मने मने आसा से व्हाट हैपेंड सब लोग पूरा चुप हो बाकी किसी को कोई नहीं राजेश आप भी बताओ सर इसमें कुछ लॉजिक नहीं बैठा है सर अमलान ने भी जो बोला वो भी नहीं बैठा है सर जैसे इसने बोला कि टी टी 2 बार आया तो टी के बाद यू आता है तो यू लिख दिया ऐसे तो सर आई का तो बन ही नहीं रहा है आई के बाद तो जे आता है जे तो आना चाहिए था नहीं यही तो मैं सारा पहले आप लोग सोचा कि ऑब्जर्व सर करके आप बताओ कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है हाँ सर मेरे ख्याल से ये 2 लेटर जैसे इफ के बाद डब्ल्यू है तो डब्ल्यू को पहले लिख रहे हैं फिर उसके बाद 2 लेटर छोड़ के फिर आई लिख रहे हैं फिर उसके बाद आर का बीच में फिर ये लॉजिक नहीं कर रहे हैं okay ठीक है Rajesh has said his observation says now Raskishore you tell me what your observation says Sir, I'm thinking, sir. okay আৰু কোনোবাই ক'ব বিচাৰিব okay anyone else would like to tell or you can go to the next topic you just take a screenshot of this you'll look at it after the class ठीक है ध्यान से एक बार देखना अगर स्किप करोगे तो दिक्कत आएगी स्किप मत करना ठीक है थोड़ा हमें इसको एनालिसिस करना पड़ेगा यू हैव टू यूज योर ब्रेन राइट don't just sit idle now Sir, Manuel हाँ yes sir, substitution to কেনেকে হৈছিল হেতু ভাবি পোৱা নাই সেইটোতো ভাবিবলৈ কৈছো তোমালোকক how is actually done and I have already given the answer actually you those who have got it then they can answer it little bit observation needed do that okay I hope you all have taken the screenshot right yes or no yes sir Yes, sir. okay. Yes, sir. now mono alphabetic cipher security में क्या हो रहा है to tell of how many keys we have you know about the permutation combination right क्या difference था permutation में हमें क्या मिलता है और combination में क्या मिलता है can anybody tell me so এনেকুৱা আছিল factorial n by factorial c into factorial n minus r এনেকুৱা আছিল combination permutation to পাহৰি থাকিলি Sir, actually, NCR. अरे वो फॉर्मूला देखो आप लोग हमेशा थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना और अच्छे से सोच जो फॉर्मूला है ठीक है ये फॉर्मूला आप लोग तो याद रखते हो दैट इज एक्चुअली ठीक है रख रहे हो तो अलग बात है बट दैट इज नॉट द वे हमें जब सीखना पड़ता था ना हाउ वी आर बीइंग टॉट हमें फॉर्मूला खुद बनाना पड़ता है अगर आप लोगों को परम्यूटेशन कैसे काम करते हैं और कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं ये अगर याद रहेगा तो यू कैन बिल्ड योर ओन मींस द फॉर्मूलास बाय योरसेल्फ ठीक है परम्यूटेशन में क्या कर रहा है कोई ये मुझे बता सकता है व्हाट वी आर डूइंग थ्रू परम्यूटेशन जल्दी you got these topics before sir arrangement okay
Anyone else? Combination or I select one. So that's what I'm just asking. We are just arranging things, and it's on you that how you are arranging the things. 26 letters are there, 26 different ways, or 26 different ways means different places are there. If you change the positions, obviously it comes to the factorial 26, right? So this number of keys are possible. So with so many keys, you might think secure, but that would be wrong because of the language characteristics. Because you know brute force attack can apply all the candidate solutions. So although we think that yeah, so many keys are there, so that many number of keys can be easily breakable by the help of an algorithm which is brute force based. It takes time, but it can be broken. Okay. Now language redundancy and cryptanalysis. Human languages are redundant. नाउ ये जो रिडंडेंट टर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत बार हमने पढ़ा था. आप मुझे कोई जल्दी से बताओ व्हाट डज इट मीन बाय रिडंडेंट? So same piece of information in two separate places. No. So copy information of database in different sites. अरे एक वर्ड में, ठीक है, सही बताने की कोशिश कर रहे हो, बट एक वर्ड रिपीटेशन. रिडंडेंट मतलब क्या होता है? इतना सारा बोलने की रिपीटेशन कर रहे हो आप लोग. मैं बोल रहा हूं सपोज दिस इज माय पेन. इसको मैं बार बार रिपीट किया. यस और नो? इज इट रिक्वायर्ड? Yes, sir. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. रिडंडेंट इंफॉर्मेशन मतलब दोस इंफॉर्मेशन जो आप रिपीटेडली कर रहे हो, जो इट इज नॉट नीडेड एग्जैक्टली, राइट? सिमिलरली यहाँ एग्जाम्पल देखो, टीएस, एलआरटी, एसएम, ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, लेटर्स आर नॉट कॉमनली यूज. In English, E is by far the most common letter. ये हम maximum time use करते हैं. Followed by these are, this needs observations only. But some letters like Z, J, K, Q, X, they are rarely used. ध्यान से आप लोग सारे words को observe करोगे, कोई भी words को आप जो आप daily use करते हो, तो आप लोग देखोगे ये चीज. You are using E maximum times, followed by those other letters mentioned there. But that Z, K, Q, X, yes, they are used. But if we compare them with the other letters, then they are means rarely used. Now, why I'm saying this? Because you know, password is a kind of what? The word you are giving, right? What you are giving can be easily guessed if I know you. So similarly, those letters which are not means commonly used, so it's a chance that they can be given in a password, or there is again the same chance that some common people will give the letters which they use frequently. So it's a confusion, of course. So as a password breaker, you have to think like that. But it's very easy if you analyze this carefully, because otherwise that many number of accounts hack were not possible, right? बुझी पाया सा what I am trying to mean? Yes, sir. Okay, तो इसी तरह अगर इसका एक ग्राफ बनाया जाए, if we try to means plot them, the letters which have been frequently or not frequently used, will get this plot. English letter frequencies. So can you tell me which letter here showing maximum frequency, means maximum time use? E. E, sir. E. Good. After E? E. Yes? E, T, T, T. T, then A. Okay, good. This graph is very important. You can take a screenshot of it, but this is true. ये जो आपको ग्राफ दिखाई दिया है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो मिला है वही है. ठीक है. नाउ ठीक है, ये हो गया आपका. और मैंने जैसे बोला, whenever we go for analyzing this, first we have to know that person who is doing that. Okay, when we analyze, please keep your mic mute, whoever he is. Okay.
So that's it. Now, key concept, monoalphabetic substitution ciphers do not change relative letter frequencies. And this is discovered by one Arabian scientist in 9th century itself. कितना पहले ये discover किया गया था, right? Calculate letter frequencies for cipher tags. Compare counts or plots again known values. If Caesar cipher look for common peaks or taff, then peaks at this one. Okay, taffs at J, K, XZ means कहाँ ज़्यादा use हो रहा है, कहाँ कम use हो रहा है. Then for monoalphabetic, must identify each letter. Then some tables of common double and triple letters. We'll go through it in the next class. Today, we'll stop here. And one question for all of you that I have given here. Don't forget it. Okay? ये तो एटीआई करीबा ये क्लास के बाद तुरंत आप लोग करने की कोशिश करना जो मैंने दिया था. ठीक है? So I'm stopping right here. Yes, sir. Thank you.